conditions as well. But let's talk about the temperature. It's 14 degrees and the humidity around is 33%. Before getting into the surface, let's talk about the dimensions. A quick reminder, it's 66 all around the ground. And now, this surface is the same which has been used yesterday for the game. But to analyze it further, I've got Salman Butt with me. Salman, it's been rolled, but what do you make of it? Well, it doesn't matter what you do with the roll, but the point is that the cracks are opening up. It's been used time and again in this tournament. So the abrasiveness is growing, the roughness is there, but still you have to say that it is a pretty good cricket pitch. And if you have a perfect batting session, you'll still get runs over 180 if you do get one. Because we are seeing teams lose their way in middle and still get to 160 plus. So imagine having a partnership that takes you through how many will you get. So it's about batters selecting the shots accordingly. Yes, it is assisting the spinners a bit more, but this overcast condition might just assist the fast bowlers today. Yeah, it's being reused now, so we've seen that there's been a lack of pace as well. Yeah. What should the batters do for the adjustment? Just play late, adjust to the conditions, play spin with the spin, or maybe shots if you can play the sweep shot. Some people can use their feet well, so it all depends what your game is. So you have to bring your skill sets and adapt to this condition. Well, that's it. Play a little bit late. It's going to be conducive for the bowlers, but runs are definitely there. Quite a chilly morning here in Rawalpindi for match number 15 of Barrier Town Champions T20 Cup. It's Anglo Dolphins taking on UMT Markos. We're all set for the toss. The two captains, Fahim Ashraf, Iftikhar Ahmed and Professor Javed Malik, the match referee, all in readiness. Fahim Ashraf is going to give it a spin. पूछना बनता है कि क्या करेंगे क्योंकि नॉर्म बन गया है क्या बॉलिंग ही करते हैं कैप्टन नहीं बिल्कुल जिस तरह की विकेट है थोड़ा हल्की फुल्की मॉइस्चर है उससे हम फ़ायदा उठाएंगे जल्दी जितना जल्दी इसको आउट करे तो चेस करना थोड़ा इजी होता है कितना आप चाहेंगे कि चेस करना आसान होगा इन ओवरकास्ट कंडीशंस में भी हाँ देखो इस तरह तो हम नहीं कह सकते मगर जितना भी हो हम कोशिश करेंगे कि उसको चेस करें अच्छी टीम खेल रही है नेल बैटर हुआ आखिरी मैच लेकिन आगे आने वाले मैचेस को भी इजी नहीं लेंगे नहीं इजी इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि अभी आपको कोई पता नहीं चलता क्योंकि हम चाहते हैं कि हम टॉप करें तो टॉप के लिए आपने एफर्ट करनी होगी तो इंशाल्लाह वही टीम है सेम टीम है और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ऑल द बेस्ट थैंक यू फ़हीम अशरफ ऐसा लग रहा है कि कैंप को देखे कि काफ़ी चेंजेस की गई हैं इस मैच के लिए जी बिल्कुल कुछ लड़के जो हमारे नए थे कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी ट्राई कर लें क्योंकि अभी टूर्नामेंट हमारे लिए वैसा नहीं रहा तो कोशिश है जो हमारे नए लड़के बेंच पे थे तो उनको ट्राई किया जाए ताकि उनको देखा जाए आगे जो भी इवेंट आए उसके लिए फिर हमारी नज़रें उन पर भी हो या ओवरऑल एज अ टीम हम जब भी देखते हैं पेपर पे बहुत अच्छी T20 साइड लगती है एज अ कैप्टन आप डिसअपॉइंटेड हैं जिस तरह के रिजल्ट्स आए देखिए थोड़ा सा तो होता है लेकिन कम्बिनेशन पे या टी20 में किसी भी टीम का जब कम्बिनेशन बन जाए तो कैसी भी टीम हो चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो वो अच्छा परफॉर्म करती रहती है थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड ज़रूर होते हैं एज अ क्रिकेटर भी एज अ कैप्टन भी लेकिन हमारी कोशिश यही है कि जितना मैक्सिमम अच्छा कर सकते हैं इस टूर्नामेंट में ओवरकास्ट कंडीशंस है सरफेस कैसा लग रहा है देखें जी चीज़ें तो हमारे हाथ में नहीं जा रही लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है कि मुश्किल कंडीशन है इसमें जितना मैक्सिमम हम कर सकें कितना टोटल करना चाहेंगे अभी तो कहना मुश्किल है क्योंकि जैसे हम खेल रहे हैं लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है 160 तक तो जरूर जाए इंशाल्लाह 160 is the run. All the best Fahim Ashraf. Thank you very much. Right, the news from the toss is that UMT Markors have won the toss and decided to bowl first. Have a lot of responsibility on him. This is a new look side, so he'll have to take the responsibility. It's a cloudy morning. We haven't seen much swing in the air. Ahmad Butt was the one who got some swing. Let's see who can exploit these conditions. What do you make of these overcast conditions, Marina? But couldn't really convert them into bigger ones. Strike rate of 125. So Abdullah Farhan, well, he got some runs against his name
and he can be a very destructive batter once he's in the zone. But these conditions early on will be a test for him. Nisar Ahmed with the new ball. He loves to hit the deck hard, usually bowls around that hard length area. Did get a bit of swing the other game. Today, with these conditions, he would like to utilize it by pitching it up. Yeah, he's a very good exponent of the new ball. Remember, UMT Markhors made a sluggish start with the ball in the previous game. Probably they would have talked about it and they would want to put that right. Sabzada Farhan, 2 half centuries in the tournament so far. And that is the most important thing at the moment, because like I said, he's experienced. He will have to lead from the front. UMT Markhors coming off the back of an absolute thriller, the last one. Yeah, and the man on screen right now with the ball, he was the one who went for the winning runs. I beg your pardon, for Samad. And that was a great confidence booster. 5 needed off the last delivery. Shahid Aziz on the receiving end, and look at that. No worries, confident into the stroke and sailed it over, winning the game for Markhors. That was an absolute thriller. Ecstasy for Markhors and absolute agony for the Nurpur Lions. That was the best game of the tournament. Good areas from Nisar. He's known to do that. He's not express, but he's very skillful in terms of getting movements with the ball. Yeah, he likes that. Saibzada Farhan, slightly shorter length, likes to stay off the back foot. You can see 2 good scores against Lions, 54, and against Stallions was 59. Would be looking to score another one today. Hard lengths. This has been advised by all the experts who looked at the pitch. Even I was talking to Musa, who grabbed 3 wickets yesterday. He suggested that hard lengths are very difficult to get away, especially with the new ball, if you can get a little bit of seam movement. Yeah, the only adjustment you need as a batter is to just slightly delay your shot. Don't keep hard hands at the ball. Let it come closer to you, and then you can time it rather than trying to power it. That was the change-up delivery. Chance directed. It must be very, very close. Sarwar Afridi had a good side on view. And I think Tahir Beg is in trouble. Huge trouble. That's the last thing Anglo Dolphins would want. Without scoring, if it's an out, they'll be in trouble. Tahir Beg doesn't look confident as far as the body language is. But this guy, Sarwar Afridi, he's quick. And that was a great pickup, quick release, and right on target. Let's see what the call is. TV umpire Kashif Sohail will have to make an early call. Struggling. Oh, he's made it. Those long levers coming to his help. That was close. But Tahir Beg will survive, and that's a good thing for Anglo Dolphins. That's a morning call for Tahir. He'll be all up and alert. In the excitement of a direct hit, there was a ricochet. Just have to see what happened. 5 runs to Sabzada Farhan. Well, it's such a funny game, cricket. It could have been so worse. Could have been 0 for 1. As it is, it's 5 for none. And now Tahir Beg will take strike against Nisar, who's got 2 slips in. That's interesting. Getting an extra slip in for the tall right-hander. Back of a length, nicely behind Tahir Beg. First over done, Anglo Dolphins, a 5 for none.
That's how the things went. 4 much-needed changes for Anglo Dolphins. Bakar, Salman Afridi, Ghazi Ghauri, Abbas Afridi. He will be the key with the ball. And coming into the playing 11. Nawaz has been brought into the attack. It's an interesting move, especially for this man. Saibzada Farhan likes the pace on the ball. Experienced campaigner Muhammad Nawaz, 200 wickets in this format. Still 30 years of age, pretty young. He's been around forever, it seems. Bowling in the power play, it doesn't come new to Nawaz. He's done it for Pakistan. He's done it in PSL. The kind of conditions, slightly abrasive surface, not a bad call. Bowling, bowling. Come on, Advai, come on, Advai. And now with the surface being reused, we've seen some purchase for the spinners. And it's always good against someone who likes to attack the opponent, Saibzada Farhan it is, to take the pace off and don't give him a free platform. Nicely clipped onto the onside for a single. Just looking at the field, the offside field, 5 fielders on the offside. There's a short third, backward point, a cover point, and then fielder at extra cover. Long off his back, it's the only protection, and also the mid-wicket is back. Nicely. Invitation is there for Tahir Beg to go over mid-on, which is inside the field, the offside field. 5 fielders, be a bit of a risk against the spin. Straight to that fielder at cover. Yeah, with the look of the field, Nawaz would likely to aim that hard length area. Got an easy single down the ground. It's just a matter of time and Tahir would opt for that. Once again a shy, but getting close enough to the ball, Tahir Beg, to be able to play it onto the onside. He's tall, he's got a big stride in as well. Sajid Afridi officiating at the media center end, very experienced umpire and a very good one. These 2 square fielders are hanging deep, a little ricochet, no damage done. Nawaz not happy with the fielder conceding the one. Muhammad Asif is the other umpire. He's been in the thick of things during this championship. Catch it. Solid blow down the ground. Saad Masood sweeping up. Good over from Nawaz, just the 4 of it. 2 done. Dolphins, 9 for none. Like and subscribe. 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 Aleem Dar, one of the selectors, is in attendance. So is Wahab Riaz, the tournament director, keeping a keen eye on proceedings. Balled him. Tahir Beg went for the pull shot. It went under his bat. He cannot believe that. But there was a misjudgment on his part, and he heard the death rattle. He'll have to walk back. Again and again, we've seen that this length and line has troubled the batters. And by their own fault, it wasn't the shot to be pulled. Have a look at that. No room. Probably did not bounce as much as he expected.
but didn't cover the line. Just a flash swing of the bat and has paid the price. Mirza Tahir Beg gone on 2. Anglo Dolphins 1 down on 9. Waqar Ahmed, the new batter, making his first appearance in the tournament. And the dismissal of Mirza Tahir Beg is not an unfamiliar one. Even in the previous game of Anglo Dolphins, we saw a couple of those kind of dismissals. Just a slightly short of a length delivery, and they look to go too square. Come back and have a look, but as if Anglo Dolphins are not learning from their mistakes. Edgy, just the one slip. Akif stops the boundary. A streaky start for Waqar. Yeah, he's off the mark. Have a look at that. It's just like that instinctively. Whenever it's shorter ball, they flash the bat hard. And even if you want to do it, try to connect it way in front of your eyes. Extend your arms to make sure that you can handle the lack of the bounce or an extra bounce as well. Don't allow it to come close to your body then. Nice push. Oh, another close shave. Living dangerously. Anglo Dolphins are very, very nervous. Waqar in the end survives. Nawaz couldn't find timber. It's all happening. Nawaz is pretty quick in the field. It's a soft hand straight away, took off. Dives from both ends. That's good commitment from Waqar. But talking about that Tahir Beg dismissal, we'll talk about it. The conditions have clearly changed. They've visibly changed as well. In the mornings when you walk up to the pitch, you know that it's not the kind of surface that we were seeing at the beginning of the tournament. But just wonder that the players, saw Herrera the other day, they're not adapting to the conditions, especially initially. You're well advised, even if you're playing off the back foot, try to play with a straight bat. Try to play, if you want to play it on the onside, go for mid-on, wide mid-on. Choosing the wrong options and paying the price. I do understand the requirements of T20 cricket, but even if you want to pull it from that length, which is not that short, it's just fraction short, you need to keep your weight on the front foot. Try to connect it in front of your eyes. It wasn't that short, just fractionally, and it stayed a little bit low. Yeah, I can understand that. But again, look at that. He's in no position to pull it. He struggled to pick the bounce up, and the line wasn't as free as he stood. Sabzada Farhan couldn't pierce the field. 3 done. Anglo Dolphins 12 for 1.
Hasanullah, he's a character. Very interesting to see if his teammates can put some runs on the board and see the speedster can do his job. He bowled pretty well in the previous game. No run. Hard hands from Wakar. Our first look at him. Must be a bit nervous as well playing at this big stage. Yeah, but the easiest thing he can do to calm those nerves is just to play with soft hands and get off the mark. You can see the fielders on the offside or on the ring. Bowling. Bowling, Naad bhai. बहुत अच्छी line है, Again, बहुत hard अच्छी line hand है. straight to Iftikhar. Come on. There's a huge gap. If he can beat Iftikhar and at Come least on, get a come on, run. Naad bhai. I think Nawaz is probably setting him up. We know that he has the ability to turn it ever so slightly with the new ball even. आजा, 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 आकिफ, आकिफ. Wide of the crease. Really trying to create that angle, Nawaz. Come on, come on, come on, Naad bhai. You could tell by looking at Wakar. He's a bit nervous. He's got an option to nudge it down the ground for a single or soft hands. Either way of the wicket. Should do it. Dot balls are not going to help him. Dropped by Nafe. I didn't think it got the edge, suggesting by the reactions from Nawaz and UMT Markhors. That gripped and turned just a little bit. Yeah, that's probably the setup. That turn there. 3, he just fired in with the angle, and this one slightly turned away. Maybe the in drifter, the next one. No run. Setting up for that leg before, trying to get that front foot right across. And that Bowling, bowling, Naad bhai. effort so far, the arm delivery hasn't been as Grip effective. हो रहा है, Sarfraz grip हो रहा है, इधर break भी हो रहा not है. looking very pleased, and understandable so, because his team has really not performed well in this championship. Another dot. Pressure's building. Good start from UMT Markhors. Anglo Dolphins 12 for 1. खामोश आगाज़ एंग्लो डॉल्फिन्स की जानिब से और साहबजादा फरहान जो हैं अभी तक ज़्यादा खुलकर खेल नहीं सके। उनका जो स्ट्राइक रेट है वो महज 18 है 12 गेंदें खेलने के बाद। दरअसल ये 25 है 12 गेंदें खेलने के बाद, जो कि ख़ासा गैर मामूली लगता है और कमतर भी T20 के लिहाज से। बहुत ज़्यादा तब्दीलियां की हैं डॉल्फिन्स ने, देखना ये कि वो कितनी कारगर साबित होती। सलमान भट्ट कमेंट्री बॉक्स में। बहुत शुक्रिया तारिक भाई। जी हाँ, आज 4 तब्दीलियां की हैं डॉल्फिन्स की साइड ने और काफ़ी यंगस्टर्स को चांस मिला है। साहिबजादा फरहान इस टूर्नामेंट में थोड़ा ऑफ कलर नज़र आए हैं अभी तक, और आज भी कहानी कोई तब्दील नहीं हुई फ़िलहाल। पावर प्ले के अंदर एक होता है आप कोशिश कर रहे हैं और शॉट ना लग रही हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि शायद वो वक्त गुजारना चाह रहे हैं क्रीज के ऊपर कि वो इनिशियल पीरियड उनका गुजर जाए, लेकिन उससे टीम का फ़ायदा नहीं हो रहा। 14 रन, एक खिलाड़ी आउट है और यही वो वक्त है जहाँ पर आप
कैपिटलाइज कर सकते हैं नए बॉल के ऊपर। ये देखिए 2 दफ़ा इन्होंने रन्स किए हैं, लेकिन उसके बावजूद फॉर्म में नहीं लग रहे, स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं। और उठा खेला, गेंद महज ऊपर चली गई और बॉलर खुद ही इसके नीचे आए और आकिफ ने साहबजादा फरहान की ये मुजाहिमत खत्म कर दी। लंबे कद के बॉलर हैं, पुल करने के लिए गए थे और पहली बार नहीं हुआ इस सीजन में लेफ्ट आर्म सीमर को पुल करते हुए आउट हुए साहबजादा। जी हाँ, पिंडी में पेस एंड बाउंस थोड़ा बेहतर है निस्बतन दूसरी ग्राउंड्स के पाकिस्तान में। ये देखिए, और आकिफ जो है वो तेज भी, और ये गेंद बाहर की तरफ एंगल था, ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ, तो ये पोजीशन कोई बहुत अच्छी नहीं थी इस शॉट के लिए। और टॉप एज के बाद एक कॉटन बोल्ड आकिफ ने खुद मुकम्मल किया इसको, और साहिबजादा की कहानी तमाम की। 3 रन्स बनाए इन्होंने और एंग्रो डॉल्फिन्स 14 2 खिलाड़ियों के नुकसान पे। शुरू के दिनों में सलमान खान को एक मौका मिला था, आज इनकी टीम में वापसी हुई है। ये वाइड करार पाएगी, लेग स्टंप खासी बाहर से। और साहबजादा फरहान जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया में भी वहाँ पर स्पेंसर जॉनसन ने इनको खासा परेशान किया था लेफ्ट आर्म एंगल पर। इसी तरह पुल शॉट खेलते हुए ये आउट हुए। जी हाँ, ये देखिए पोजीशन जो है इसको पुल मारने की अगली टांग पर थे, लेकिन लेट हुए हैं बॉल के ऊपर। और यही कहानी थी जो ऑस्ट्रेलिया में हमने 3 दफ़ा मुसलसल देखी। और स्पेंसर जॉनसन भी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर थे, उनकी भी पेस अच्छी थी, वो भी दराज कद थे। तो ये शॉट अगर या तो इस पे काम कर लें या इसको थोड़ी देर अगर वो अवॉइड कर लें तो बेहतर है, और बाकी इसके अलावा जो दूसरे बॉलर्स हैं उस पर अटैक कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने उसी पे अटैक किया जहां पर वो फंसे हुए हैं। ये देखिए एक बार फिर इस शॉट का मंजर। कभी कभार प्लेयर्स ऐसे भंवर में फंस जाते हैं कि एक ही चीज बार बार जो है वो होती रहती है उनके साथ। ऐसे में उस शॉट से निकलना बेहतर होता है। तो क्या बेहतर नहीं होता ये जो भंवर है इससे निकलने के लिए, या तो इस शॉर्ट बॉल को आप ऑफ साइड में खेलने की कोशिश करें। आजकल जिस तरह पेस का इस्तेमाल करते हैं बल्लेबाज, पेस और बाउंसर को इस्तेमाल में लाते हैं, या फिर दूसरा ये तरीका होता है कि आप गेंद को छोड़ दें। देखिए हाँ, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, रूम बना के पॉइंट के ऊपर से भी खेल सकते हैं, थर्ड की तरफ भी आप खेल सकते हैं। ये देखिए वही शॉट जिसकी हमने बात की कि रूम क्रिएट किया और उसे पॉइंट के ऊपर से खेल दिया, और उसी एंगल का इस्तेमाल उस तरीके से किया जिसकी हम बात कर रहे थे। तो एक अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन भी हमें मिल गया बातों के दौरान। एंग्रो डॉल्फिन्स 20 पे 2। तो देखने वालों को भी जरा समझ आ जाएगी। बड़ा ही अफसोसनाक ये आगाज कहा जा सकता है। 5 ओवर्स में 20 रन, दोनों ओपनर्स वापस जा चुके हैं।
कासिम अकरम, इसके अलावा गाजी हैं, खेलने के लिए आएंगे। मिडल ऑर्डर में खासी तब्दीलियां हो गई हैं। उमर अमीन नहीं है, मोहम्मद अखलाक नहीं है, हुरैरा भी आज नहीं खेल रहे। फ़हीम अशरफ इस टीम में कदरे बेहतर फॉर्म में नज़र आए हैं, और अगर हम उनकी गेम देखें तो वो बैकफुट पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मजबूत प्लेयर हैं, पिछले गेंद को अच्छा खेलते हैं, और आकिफ की जो लेंथ है वो कदरे पीछे है, हार्ड लेंथ पे बॉलिंग करते हैं। तो फ़हीम अपने आप को एज अ कैप्टन प्रमोट कर सकते हैं और उस मुश्किल बॉलिंग से वो खुद डील कर सकते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने अपने बैटिंग ऑर्डर को कहीं तब्दील नहीं किया। जी, और नवाज जैसे जो स्पिनर हैं इनसे भी जल्दी निपट सकते हैं, और ये एलबीडब्ल्यू होंगे। स्टंप्स के सामने थे, अंपायर को कायल नहीं कर सके मोहम्मद नवाज। ये बहुत 19-20 साल नया बॉल स्पिनर करे, और देखिए ये थोड़ा सा टर्न हुआ बॉल, शायद बेनिफिट ऑफ डाउट जो है अंपायर ने दिया बैटर को, जो कि बिल्कुल दुरुस्त फैसला है, लेकिन बड़ा ही खतरनाक हो सकता था ये शॉट। अंपायर मोहम्मद साजिद का अच्छा फैसला, बड़े एक्सपीरियंस्ड अंपायर है ये। लॉन्ग ऑफ है, डीप मिड विकेट है, बैकफुट से खेला। यहाँ पर दूसरे रन को लौट जाना चाहिए। अच्छी दौड़ और चैलेंज किया डीप मिड विकेट को उन्होंने, लेकिन वकार जल्दी निकल आए थे दूसरे रन के लिए। यहाँ बैकफुट पर खेले थे और आहिस्ता खेले थे, दानिस्ता तौर पर, ताकि फील्डर को पहुंचने में वक्त लगे। एंग्लो डॉल्फिन्स की टीम अभी तक कामयाबी से महरूम है, और दूसरी जानिब मोहम्मद नवाज जो हैं, इनकी बॉलिंग का जादू जो है वो सर चढ़ के बोला है। यहाँ पर ख़ास तौर पर जब जब इनकी पहले बॉलिंग आई है, इन्हें खासा परेशान किया है। पिच से इनको मदद मिली है, सुबह की तरावत से भी, और इस बार अपनी मदद आपकी सलमान ने उम्दा फुटवर्क दिखाया, और उसके बाद अपने हाथों को काम में लाए। बेहतरीन शॉट, इनसाइड आउट, 4 रन। जी हाँ, इस बार कदमों का बड़ा बेहतरीन इस्तेमाल, अपने आप को रूम दिया, और इजाफी रूम देना पड़ा इनको, क्योंकि नवाज ने उन्हें फॉलो भी किया, लेकिन कामयाब रहे। इसको बड़ा अच्छा एग्जीक्यूट किया उन्होंने, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 4 रन के लिए। सेफ शॉट, स्पिन के साथ खेला है। पावर प्ले का आखिरी ओवर, फायदा उठाना चाह रहे हैं। इस बार अच्छी रनिंग, फील्डर जो थे अपनी जगह पर मौजूद थे और फायदा उठाया उसका बैटर्स ने। पार्टनरशिप चाहिए एंग्लो डॉल्फिन्स को, अभी तक बड़ी पार्टनरशिप अपने बैटर्स से मिली नहीं है इस टूर्नामेंट में। ये बड़ी समझदारी के साथ खेल रहे हैं। सलमान ने इसी ओवर में सीखा है, पहली गेंद जो एलबीडब्ल्यू की अपील हुई थी उसके बाद से उन्होंने अक्रॉस खेलने की कोशिश नहीं की, और उसी तरह की जो गेंदें हैं उनको ऑफ साइड में खेलने के लिए कोशिश हैं। अच्छी क्रिकेट यहाँ वकार की जानिब से, आखिरी गेंद पर उन्होंने 1 रन हासिल किया। इस ओवर में 8 रन आए, 28 पर 2। ये लेंथ को सही तरह, बाउंस और लेंथ दोनों को जांच नहीं सके थे। साहबजादा फरहान दूसरा शिकार हुए, आकिफ ने उन्हें कॉटन बोल्ड किया बाउंसर पर। दिबाबकार ने अच्छा कट शॉट खेला, और सलमान ने पावर प्ले की खामोशी को तोड़ा। दोनों खिलाड़ी जो हैं वो एक एक चौका लगा चुके हैं। अब फील्ड जो है वो खुल जाएगी अंपायर के इस इशारे के बाद। 5 फील्डर
बाउंड्री लाइन पर चले जाएंगे, लेकिन क्या 5 फील्डर बाउंड्री पर खड़े करने की इस वक्त ज़रूरत है इफ्तिखार को? देखिए एंग्रो डॉल्फिन्स अंडर प्रेशर है तो रख सकते हैं थोड़ी देर वो प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। ये देखिए प्रेशर को मेंटेन करने के लिए फील्ड को ऊपर रखा जा सकता है। कैचिंग पोजीशंस, स्लिप को ले सकते हैं, पॉइंट का फील्डर दायरे के अंदर ले सकते हैं। और इंटरेस्टिंग होगा दिखाना कि साहिबजादा फरहान जिस एंगल को पुल करना चाहते थे उसी एंगल को नए आने वाले बैटर ने पॉइंट के ऊपर से खेला। तो वो जो आपका सवाल था कि इस गेंद पे क्या और कर सकते हैं, तो वही ऑप्शन आपको, ये देखिए उस एंगल को अक्रॉस द लाइन खेलने गए और लगातार खेलने की कोशिश कर रहे हैं और आउट हुए जा रहे हैं, और आकिफ ने खुद कैच किया। देखिए एक बार फिर ओपन किया अपनी फ्रंट लेग को और सामने खेला है फ्लैट बैट। प्रिडिक्टेबल थोड़ी लेंथ हो रही है आकिफ की, इसीलिए बैटर आसानी के साथ ये स्ट्रोक खेला। और यही देखिएगा कि अब उसी लेंथ को देखिए बैटर ने वेट करके पॉइंट के ऊपर से खेल दिया। तो साहिबजादा फरहान के पास ऑप्शंस तो हैं, लेकिन चूज तो उन्होंने खुद करना है। यह सिक्के का जो दूसरा रुख है वो आपको देखना पड़ता है। बैटिंग के भी बड़े शेड्स हैं, बैटिंग का भी जो हर रंग है उसके भी साथ साथ शेड्स हैं, तो इस गहराई में जाकर सोच सकते हैं आप। जी हाँ, हिकमत अमली जो है वो आपको बदलनी पड़ती है। कई बार कोई ऐसा बॉलर होता है कि जिसका एक ही टीम के खिलाफ एक बैट्समैन को उसका एक्शन, उसकी स्पीड की जजमेंट में मुश्किल हो रही होती है और दूसरे को बड़ी आसानी हो रही होती है। तो टीम गेम यही है कि आप हिकमत अमली के साथ उसको इस तरह से खेलें कि जो आप अगर फंस रहे हैं तो आप उसके सामने कम आए, दूसरे पार्टनर से बात की जाए, कम्युनिकेशन बड़ी ज़रूरी है। तो चीज़ों का हल निकल सकता है, थोड़ा जहन लगाना पड़ता है, थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। जहाँ इससे कहते हैं हर मुश्किल का हल होता है, आज नहीं तो कल होता है। क्या बात। सलमान और वकार जो हैं ये रिवायती अंदाज में इस वक्त खेल रहे हैं। यहाँ पर इस बार गए थे हुक करने के लिए, एक ही रन यहाँ पर मिलेगा, लेट हो गए थे। एंगल और रफ्तार दोनों पर आज आसमान पर गहरे बादल छाए हुए हैं, लेकिन पिच में रन्स मौजूद हैं। पिंडी में आमतौर पर जब बादल छा जाते हैं तो बॉलर्स भी ऐसा करते हैं, लेकिन रन्स हैं इस पिच पे। बिल्कुल, हिकमत अमली तब्दील होती है, कुछ शॉट्स आपको बदलने पड़ते हैं, कुछ शॉटों से आपको गुरेज करना पड़ता है, लेकिन मुमकिनात में से है रन्स का होना। अच्छी पार्टनरशिप लगे तो यहीं पर बड़े रन्स भी बनते देखे हैं हमने। 9 पर पहली, 14 पर दूसरी विकेट गिरी। निसार ने एक बार फिर और जल्दी आकर उनने दागदार किया, और उसके बाद आकिफ जावेद ज़्यादा पीछे नहीं रहे। आज पहली तब्दीली पर बॉलिंग करने के लिए आए थे, अपनी मदद आप की उन्होंने। ताहिर बेग थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बॉल ऊपर आएगी, लेकिन बॉल उस तरह ऊपर नहीं आई और बोल्ड हो गए। कि निसार ने इस टूर्नामेंट में बड़ी कंसिस्टेंट अच्छी लेंथ पे बॉलिंग की है और बैटर्स के लिए उन्होंने आसान नहीं किया स्कोर होने देना। देखिए 2 ओवर्स में 10 डॉट बॉल है और पावर प्ले के अंदर इतने डॉट बॉल्स, नवाज ने भी 10 डॉट बॉल किए हैं, तो दोनों ओपनिंग बॉलर्स ने कुल मिला के 20 डॉट बॉल्स किए हैं। तो प्रेशर तो आना ही आना है बैटिंग साइड के ऊपर। बहरिया टाउन चैंपियंस कप T20 टूर्नामेंट
उसका ये 15वां मैच आज खेला जा रहा है। तमाशाई हर रोज आते रहे हैं, अच्छी हाजिरी रही है। दिसंबर के इस तीसरे हफ्ते में भी रन हासिल किया। विकेटों के पीछे ख्वाजा नाफे थे। एंग्रो डॉल्फिन्स को अब यहाँ से करना क्या होगा? अभी अगले 13 ओवर्स में 7 ओवर्स के बाद 33 पर 2। like and subscribe, like and subscribe. आज तो एजाज जूनियर जो कि हेड कोच हैं, आज सुबह वो भी ट्रेनर के साथ मुशक्कत में मसरूफ़ थे। शायद फिटनेस का मैच पड़ा हुआ आपस में कि ज़रूरी है, अच्छा है, कोचेस को भी फिट होना चाहिए, तभी वो ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं प्लेयर्स के साथ। साद आए बॉलिंग पे और साद का जो इस टूर्नामेंट के अंदर जो उनका किरदार रहा है बड़ा ही इम्पोर्टेंट रहा है अपनी टीम के लिए। बॉल के साथ भी अच्छी बॉलिंग करते रहे, इकॉनमी रेट भी इनका डिसेंट रहा है और बैटिंग में भी जब ज़रूरत पड़ी है इन्होंने बहुत शानदार इनिंग्स खेली हैं, फील्डिंग में कैचेस किए हैं। यही वजह है कि मोहम्मद जाहिद जो कि टेस्ट क्रिकेटर हैं, उनका इस 11 में अपनी जगह बनाना मुश्किल हुआ है। जाहिद महमूद जहाँ क्योंकि पहले ही दिन जब ये प्लेयर ऑफ द मैच हो गए थे तो इन्होंने एहसास दिला दिया था कि इनका ताल्लुक जो है इस टीम से है। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, ये अपने करियर के इब्तिदा से ही एमडी हैं, मल्टी डायमेंशनल हैं। तो इस फॉर्मेट के अंदर ख़ास करके तो कप्तान यही चीज़ें देखते हैं कि अगर आप बॉलर हैं तो साथ अगर आप 20, 25, 30 रन करने की अहलियत रखते हैं, अगर आप अच्छे फील्डर हैं तो यही चीज़ें आजकल के दौर में आपको एज देती हैं सिलेक्शन में दूसरे प्लेयर के ऊपर। तो आजकल जितने भी बच्चे क्रिकेटर बनना चाह रहे हैं, चाहे आप प्रेडोमिनेंटली बैट्समैन हैं, बॉलर हैं, लेकिन आपको अपनी सभी स्किल्स पे काम करना है। और ये अच्छा शॉट है, डिले किया अपने स्ट्रोक को और बिलावल भट्टी ने डाइव ज़रूर किया था लेकिन नाकाम रहे इसको रोकने में। सो ये अच्छा ओवर जा रहा है एंग्रो डॉल्फिन्स के लिए अभी तक। यहाँ थोड़ा सा बचकर गेंद करने की कोशिश की थी, अच्छी प्लेसमेंट की। वहाँ वकार जो है या खासी बाहर गेंद को वो लेट खेलने में कामयाब हुए। फिर से बाहर उन लेग ब्रेक की कोशिश की। एक बार फिर 8 रन इस ओवर से 41 पर 2। Two down on 41 for Anglo Dolphins. The trouble continues. Now they're in a rebuilding phase. 27 of 21, the partnership between Salman Khan and Bakar. Birawal Bhatti. He made an impression in the previous game with the very first over, but did went for runs. Good economy, experience is there. Skiddy one, and conditions will aid him and cause more trouble to the batters in the middle. Straight in the block hole, and pick up a single. Not sure what the mindset of Anglo Dolphins are, because they have
all the resources, but still the execution is not there. But what's there is Barrier Town. They're going global. They're about to build a world-class gated community in Dubai South, something to look forward to. But right now, where they're standing, Anglo Dolphins, what would be their mindset, Ali Yunus? Hope. Well, they can hope now because there's nothing much left for them in the tournament. It's about that these new youngsters, somebody like Waqar Ahmed, Salman Khan, Ghazi Gauri, they've included in this match. Get some runs behind their back. Going into the other tournaments, it will be handy for them. That is what Fahim Ashraf said at the toss also. It's about the next tournament now. Keep building the new players. They just have not got it right in this tournament. Pitching it up, and it's driven beautifully by Bakar through the gap for a boundary. Pitched up, and how many times we've seen batters play this classical extra cover drive whenever it is pitched up to them. And Waqar playing for the first time in the tournament, making a mark for the team. Again pitched up, beautiful balance also. Bit of a punch in the end, and the placement, that is good batting. Fahim Ashraf would be thinking, where was he earlier? Why didn't he include him earlier? Down the track, takes the charge. This time the aerial route. One bounce over the fence. Back-to-back boundaries for Waqar. Where were you, buddy? Waqar is looking so good. Brings up the team's 50 with that rocking shot over the head of the fielder. He's taken his time early on, but now he's making use of it. That is good batting. Attacking intent now. Bilawal Bhatti with this length. Getting to the pitch of the length, and there was no intentions of keeping it down. Good batting. Oh, nipped back in. Quick run there. Got away with it, Waqar. Probably searching for that swing, Bilawal, but it's too fuller and comfortable for someone like Waqar. This one was slightly on a hard length, nipping back. Yeah, good pace also. Bilawal Bhatti. Good running also, good cricket. Ten already of this over, conceding 2 boundaries. Still overcast conditions. Sun trying to pierce out of those clouds. One more to go in this over. Hard length. Probably down the leg and also the height. Dot to end the over. Anglo Dolphins after 9, 2 down on 51. To Iftikhar, it was hit hard. Good initiative from Waqar. He's not sparing those bad deliveries. Slower through the air, waited for the turn. So Marina Iqbal, a bit of a dull period in the game. The partnership is building. Let's talk about the youngsters that have impressed us in the tournament this year, especially this format. One for sure, in my opinion, the one is bowling. Saad Masood is right up there with the new youngsters. Hassan Nawaz, another one that we can really talk about from the Lions. Shahid Aziz from the Lions. Ali Raza as well, with new ball. He's been
on spot, and he's came out as a very mature bowler in this tournament. Nudged it, paddled it, just for single though. Yeah, but this lad, he can bat, he can bowl, he's a gun of a fielder. He's made an impact in this tournament. Good to see Ehsanullah come back in this tournament. All the good things about this tournament we're talking about. There's nothing good about this delivery though. Banged in short. Just one run. So this is what the Champions Cup has been about. Just giving these youngsters opportunity to flourish. And they're taking the opportunity. Somebody like Saad has, Hassan Nawaz did, Shahid Aziz did, Ali Raza did. We'll come back to the same topic after this over, and it's time for the players and the officials to have a drink break. A 42-33 between Waqar and Salman, both into the 11 for the first time, and they are delivering what was much expected of this lineup. That's how things started. Again, the short ball has been dismissed for Anglo Dolphins, not picking up the skiddy Nisar. This one again off the front foot, wanted to pull it. Saibzada Farhan was undone by pace and bounce of Akif. Conditions were good early on as far as bowling is concerned. Did well. Look at the economy from Nisar. Just 1.50. 1 wicket for him, 1 for Akif. Other 3 wicketless so far. 10 overs, 56 for 2. They'll think that they've done a good job bowling first. Just given away 56 runs in the first 10 overs. Mr. Bhatti will continue. Picked up nicely. Half tracker, and he got the treatment it deserved. Yeah, he's finding that mojo now. The way he's hitting them, quite comfortable. Look, it looks so natural. Picking up the length beautifully and hitting it with his no one there. Good batting. He understands that he's well set now. He needs to convert this start into a big inning. Just make a name for yourself, young boy. He's been around. He's been playing for KP and Peshawar side. But this is another opportunity here. Just to make a name for yourself. This time off the offside. The previous delivery prompted a change in field. Got deep mid-wicket. 45 coming in. The idea is to keep that length going on. The hard length slightly fraction short. I was in business for a little while. I think experienced bowlers have figured it out that what length is required on this surfaces, as the tournament is 2 weeks old now. So now the lengths have changed. When we started off, lengths were different. But the question is, are they consistent? Oh, there's this opportunity. Still there is. He doesn't look that happy, Nafe. Not happy with the throw, maybe. Wanted a better throw. And there was a definite chance of a run out. Miscommunication, both batters, ball watching. And he's in trouble now. Salman had to turn quickly back to get into the crease. Let's see if UMT Markos have managed to get another one down. Here's the throw. Oh, throw is not that bad. And he's out, short of the mark. Salman, this will add more pain to what he is now in. I wonder why Nafe Shahid was not happy. Khwaja Nafe rather. It was a great throw. And he's got the man. 3rd wicket for UMT Markos. More troubles to Anglo Dolphins, as Salman now has to take the walk back off the back foot.
Look at that. They did initiate it, but he was way out of the blocks. Probably half. And Nafe wasn't happy with Sarwar, but you don't want to test his arm. It was a decent throw. Salman Khan back in the hut now, scoring 13. Anglo Dolphins 3 down on 61. Qasim Akram walks in, likes to take the attack back to the bowlers, but this is a whole different scenario. He can bat for sure, strike rate of 124, average 20.5, scored 5 50s. It's not going to be easy moving forward from halfway stage with 3 down. Loud call, and he's out in the middle because of what happened earlier. Run out, we've seen that often. Yeah, he called for 2 early on, but he was quick to respond to no, but by that time it was late. Salman backed off too much. It's a season of runouts. Iftikhar got himself run out 3 times in 4 innings. Kamran Ghulam got himself run out last night against South Africa. Risty. It's been that sort of a season so far. People are running themselves out. Qasim Akram, even in the previous game, he came in and he was at the bowler with hard hands. His bat was probably out hanging, and with the sort of surface now we are witnessing, it's not a wise technique to go about. You can see there, Bilawal just trying to whip it. Picked up, they've got protection there. Just a single. 1 to end the over. After 11, Anglo Dolphins are 62 for 3. The great Mahmood Ahmed with the Dolphins. It's not a happy man though. Former international. Swag about him. Looking very good. Qasim Akram has gone for the big shot and will clear the boundary with some ease. That was a massive hit. Qasim Akram just came in. Just faced 3 deliveries. It was there in his zone. Sood erring in length. That was a great length to pick up this shot. Great force, great swing of the bat. And all the way for 6. That's a huge hit. Into the stands. Pressure on Saad now. Tossed it up into his zone. First delivery maximum. Slower this time, and length was better, but still will manage to pick up a couple. Bilawal Bhatti overrunning it, allowed and made it easy for Qasim and Waqar. It's very chilly out there. It's not easy. Great pressure from the batters. Running hard for the first run. Put the pressure on the fielder. Again, shorter in length. Qasim Akram, well, he had opportunities to win the games in this tournament for the team, but could not quite do it. He's played good innings, but those finishing touches, that's been missing.
So once he's played enough cricket at this level, or Shaheen's even and domestic level has been around for a while, it's about time that he starts winning the games for the team, especially those finishing touches, because he usually bats at 5, 6 or 7. It's very important that you have that habit of finishing the games rather than being impressive. Just trying to implement that shot. I think it's whenever he has walked in, the situation and the requirement is different with what his game plan is. And that's where he has lost the plot. Even today you can see from ball 1 he's attacking. It's a good thing, but you need to understand the scenario. About to end the over. 11 off it. 12 gone, Anglo Dolphins 3 on 73. Overhead level इफ्तिखार after 12. Bowling change है Qasim. समझ भाई 73 पे 3 खिलाड़ी आउट। कासिम अकरम और वकार कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छी पार्टनरशिप यहां बनाएं। कासिम अकरम ने आते ही जारहाना अंदाज अपनाया है इस टूर्नामेंट में, यही उनका अंदाज रहा है। खातिर ख्वाह कामयाबी उन्हें मिली नहीं, आज टीम काफ़ी उन पर डिपेंड करेगी। और ये जो प्रोजेक्टेड स्कोर्स हैं 153 से कम तो शायद बहुत ही कम होंगे यहाँ पर। खुश आमदीद तारिक भाई। यह बिल्कुल आपने बजा कहा, अभी 7 विकेटें इनके पास, तो अब इनको जो रन्स बनाने की रफ्तार है उसको और तेज़ करने की ज़रूरत है। बहुत देर से विकेट पर मौजूद हैं वकार, और इनको 150 इनका हदफ होना भी नहीं चाहिए, इससे आगे की सोच होनी चाहिए। तो उस सूरत में फिर 150 तक पहुंचना तकरीबन यकीनी हो जाएगा, और उससे कहीं बढ़ के भी इम्कान रहेगा। लेकिन अगर आपकी सोच जो है वो महदूद है तो फिर अक्सर आप उससे भी नीचे रह जाते हैं। जी बिल्कुल, इम्पोर्टेंट होगा कि कासिम अकरम इस इनिंग्स को कैसे अप्रोच करते हैं। वकार ने तो स्टार्ट हासिल कर लिया है। एक ही रन बनेगा, अच्छा एंटिसिपेट किया वहाँ अफरीदी ने। इसलिए कहते हैं कि आपको जो अगर आप निशाना लगाएंगे चांद को तो किसी ना किसी तारे को तो लगा देंगे, कोई ना कोई तारा तो आपके निशाने पे आ जाएगा। देखते हैं कि इन दोनों ने अपना निशाना कहाँ मुकर्रर कर रखा है। डॉल्फिन्स की इस टूर्नामेंट में जो परफॉर्मेंस रही है उसमें एक इनका ये भी मसला रहा है कि मिड इनिंग्स एडजस्ट करने में नाकाम रहे हैं। बसा औकात बहुत ज़्यादा बनाने की कोशिश में बहुत कम बना गए, और वो जो आपको एक मिड इनिंग्स पे रीअसेस करना होता है कि इस विकेट पे इन कंडीशंस में क्या अच्छा स्कोर है, उस तरह के फैसले करने में भी इनकी टीम बाकी टीमों की निस्बत पीछे नजर आई है। जहाँ हैरानकुन तौर पर इनकी जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग है वहाँ ज़्यादा तब्दीलियाँ हुई हैं। अच्छा खेला ऑफ द बैक फुट, 1 रन के लिए कासिम अकरम ने, क्योंकि नज़ला जो है वो मिडिल ऑर्डर बैटिंग पे इतना नहीं गिरना चाहिए नाकामी का इस फॉर्मेट में। इसमें ज़्यादा जो जवाबदेह है वो आपके ओपनर्स को होना चाहिए, आपके पहले 3 को। जिसमें टॉप 3 में हुरैरा जो है वो इन और आउट होते रहे, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। साहबजादा फरहान ने 2 निस सेंचुरियां बनाई इस टूर्नामेंट में 6 मैचों में से। जहाँ लेकिन वो बिल्कुल भी मैच विनिंग रन्स नहीं थे, टीम को उनका खातिर खा फायदा नहीं हुआ। अच्छी जारहाना फील्डिंग, एक बार फिर बाउंड्री पर अफरीदी की जानिब से 1 ही रन तक महदूद कर गए। 13 ओवर्स के बाद 77 पर 3।
AJ left arm bowling over. Oh, sorry, sir. वकार अहमद 39 पर हैं। कासिम अकरम ने भी 10 गेंदें खेल ली हैं 13 बनाने के लिए। बाकी मांदा जो 7 ओवर्स हैं, अगर यहाँ 10 की औसत से ये रन्स बनाते हैं तो ये 150 तक बमुश्किल आ सकेंगे, जो कि अच्छा स्कोर नहीं होगा इस पिच पर। आकिफ जावेद वापस आ गए हैं अपना दूसरा स्पेल करने के लिए। स्मैश किया, एक ही रन यहाँ पर बन सकेगा। ऑप्शन अच्छा चूज किया था लेकिन एक्सिक्यूशन उतनी अच्छी हुई नहीं। मिड ऑफ के फील्डर ऊपर थे, थोड़ा सा उन्होंने फ्रंट लेग को क्लियर करके मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान से खेलने की कोशिश की। काफी सोच का मुकाम फहीम अशरफ के लिए, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर अच्छा लग रहा है। बैटिंग में उनका रोल महदूद रहा है, ज्यादा फॉर्म में नजर आए हैं। क्या आप समझते नहीं कि उनको ऊपर आ जाना चाहिए था खुद अब तक? जगह बनाकर मारना चाहा लेकिन सीधा फील्डर को खेल गए। जी हाँ, बिल्कुल इनको अपना जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलना चाहिए था। कप्तान के तौर पर आप दूसरों के लिए एक मिसाल बना सकते थे। अच्छा खेलते हैं फास्ट बॉलिंग को, बैकफुट पर इनके पास स्ट्रोक्स हैं। इस पिच की मुनासिबत से ये हेड कोच महमूद हामिद हैं, दरअसल बैटिंग कोच हैं महमूद हामिद। बैकफुट पर खेला, 1 रन के लिए। अच्छे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे महमूद हामिद, पीआईए की बड़ी टीम में खेलते थे। वसीम अकरम, मुइन खान। पाकिस्तान के लिए भी खेलें, ज्यादा देर तो नहीं खेल सके लेकिन पाकिस्तान का कलर इन्हें हासिल है। और डोमेस्टिक क्रिकेट में तो खैर ये बहुत ही जबरदस्त प्लेयर थे। मैं जानना चाहूंगा कि अभी तक इस जो इनकी बैटिंग परफॉर्मेंस हुई है उसके बारे में ये क्या कहते हैं, और मिड टूर्नामेंट ऐसा कुछ उन्होंने करने की कोशिश की जिससे इंप्रूवमेंट होती? गेंद बल्ले के ऊपर लगी, वहां पर 2 फील्डर माइल हो रहे हैं और स्क्वायर लेग ने आकर कैच गिरा दिया। बिलावल भट्टी बहुत ही दूर से दौड़े थे, आखिर में वो गेंद के साथ नहीं उठ सके। काफी देर तक गेंद हवा में रही, काफी अच्छी कोशिश कही जा सकती है, लेकिन जब आप इतना फासला तय करके गेंद के नीचे पहुंच जाते हैं तो फिर आप जरूर एज ए फील्डर मायूस होते हैं कि आप उसको पकड़ क्यों नहीं सके। आप देखिए गेंद काफी ऊपर गई और थोड़ा सा मिस जज किया, रॉन्ग लाइन में गेंद की तरफ आया और आखिरी लम्हे पर उन्हें अपना रास्ता तब्दील करना पड़ा, जिसकी वजह से वो गेंद को दबोच नहीं सके। एंटिसिपेशन में चूक गए यहां पर भट्टी। शॉट बेहतरीन, ये गेंद बाउंड्री के बाहर आ उतरी है। अंपायर ने छक्के का इशारा दिया, अच्छा खेला है। ऑफ साइड में आज इब्तिदा से ही लेफ्ट आर्म सीमर को वकार ने इसी शॉट की कोशिश की थी अर्लियर, फुलर लेंथ पेस मतवा बॉल शॉट थी और जोरदार अंदाज में खेलने में कामयाब हुए। यह आसान शॉट नहीं होता, बहुत ही अच्छी एक्सिक्यूशन थी। तवील कामत के काफी अच्छे डेल डोल के इंपोजिंग प्लेयर हैं। डबल फिगर में गया आकिफ का ये ओवर 10 रन के साथ, और 14 के इख्तिताम पर 87 है स्कोर।
26 रन का इजाफा किया है। चौथी विकेट के लिए कासिम अकरम और वकार ने, जिसके सबब डॉल्फिन्स की टीम को किसी हद तक उभरने का मौका मिला है। फिर से बिलावल भट्टी का फिर से बुलावा आया है कि वो पवेलियन से बॉलिंग करें। 2 ओवर्स किए, 16 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। आकिफ और निसार ने एक खिलाड़ी को आउट किया। मोहम्मद नवाज अपना कोटा पूरा कर चुके हैं। स्लो बॉल बाउंसर के जरिए इब्तिदा की बिलावल भट्टी ने। यहाँ पे कासिम अकरम से थोड़ा सा प्रेशर रिलीज हो जाना चाहिए जिस तरह वकार खेल रहे हैं, क्योंकि कासिम का आखिर तक रहना बहुत ज़रूरी है एंग्लो डॉल्फिन्स के लिए। और वकार अब जिस तरह चार्ज कर रहे हैं उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है क्योंकि वो ज़्यादा सेट हैं। कासिम अकरम इस टूर्नामेंट में 37 उनका हाईएस्ट स्कोर। काफ़ी मायूस होंगे इस बैटिंग परफॉर्मेंस से। पाकिस्तान के चंद नौजवान मिडिल ऑर्डर बैटर्स में इनका नाम लिया जाता है, लेकिन ऐसा होने के लिए इनको इस लेवल पे परफॉर्म करना होगा कंसिस्टेंटली। मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान के पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं, तो इसलिए कासिम अकरम का नाम लिया जाता है। लेकिन ये टूर्नामेंट अभी तक उनके लिए कुछ ज़्यादा अच्छा साबित नहीं हुआ। ज़्यादा बड़ा तूलो अर्ज नहीं है इस मैदान का। 66 गज इसकी बाउंड्री है चारों तरफ। अच्छा शॉट खेला मिड विकेट पर, फील्डर डीप है और गेंद को वहां शहजाद ने आरोका। क्या उनका पांव जो है वो तो रोप पर नहीं था जिस वक्त ये गेंद को पीछे धकेल रहे थे। जैसा आप कह रहे थे, बहुत तूलो अर्ज नहीं है इस ग्राउंड का और आउटफील्ड भी बहुत ही तेज है, इसलिए जो स्वीपर्स होते हैं वो बिल्कुल रस्से से लगे लगे अपनी फील्डिंग एफर्ट का आगाज करते हैं। और अब यहाँ पे इस पिक्चर से तो लग रहा है कि अच्छी एफर्ट है शहजाद की और अच्छा टीम वर्क है। बाहर में खिलाड़ी हैं मोहम्मद शहजाद, लेकिन कल इनको अच्छी खबर सुनने को मिली। HBL PSL 10 के लिए रिटेन किया मुल्तान ने इनको, मुल्तान सुल्तान्स की टीम ने। जी हाँ, ये अब साल का वो वक्त है जब PSL की रिटेंशंस और फिर आने वाले ड्राफ्ट की खबरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं। तमाम ही प्लेयर्स ज़ाहिर हैं एक प्रीमियम इवेंट है पाकिस्तान का, जितने भी प्लेयर्स हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि उस या तो रिटेन हो जाएं या ड्राफ्ट में पिक हो जाएं, क्योंकि वो एक ग्रैंड इवेंट के लिए। ये वकार जो हैं इन पे भी नजरें रह सकती हैं, जितना अच्छा ऑफसाइड प्ले आज इनने दिखाया है। पचास रन यहाँ पर मुकम्मल हुए। वकार ने अब आज पहला मौका मिला था और इसे आखिरी जानकर वो खेलते रहे, जिम्मेदारी के साथ उन्होंने बैटिंग की। 43 गेंदों में 50 रन बनाए, अच्छी इनिंग्स। जी लाजवाब बैटिंग की इन्होंने मुश्किल हालात में। इनकी टीम एज ए बैटिंग यूनिट काफ़ी लो कॉन्फिडेंस के साथ इस मैच में आई और जल्दी विकेट भी गिर गई, लेकिन वकार ने न सिर्फ ये कि विकेट को संभाला बल्कि स्ट्राइक रेट भी उनका काफ़ी रीजनेबल रहा है। अब उनके पास प्लेटफॉर्म सेट है कि लॉन्च किया जाए यहाँ से। इसको लॉन्च किया कासिम अकरम ने, लेकिन सीधा समद के पास थोड़ा सा गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगी। आखिरी 5 ओवर्स का खेल बचा है और एंग्लो डॉल्फिन्स पहुंची 94 पर 3।
ज़्यादा लंबी बिल्डिंग्स तो नहीं है यहाँ पे एंग्रो डॉल्फिन्स के लिए, लेकिन पिछले मैच से इम्प्रूवमेंट है। पिछले मैच में तो सिर्फ 106 रन ही बना सके थे। फैजान आ गए हैं बॉलिंग करने के लिए। पिछले मैच में पहला मौका मिला था फैजान को, तब तो बॉलिंग नहीं की थी, बैटिंग में अच्छा परफॉर्म किया। अच्छे मीडियम पेसर भी हैं। अभी साथ मसूद का एक ओवर रहता था, लेकिन क्योंकि आखिरी ओवर में वो महंगे रहे थे, इसलिए उनका कोटा इनसे पूरा कराने की कोशिश की जाएगी। अच्छा शॉट खेला कासिम अकरम ने, उन्हें बड़ी आज़ादी मिल गई और ऑफ साइड में स्क्वायर के पीछे एक भी फील्डर नहीं था ये शॉट रोकने के लिए। इस पेस पर ये लाइन और ये लेंथ काफी खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। 4 के बजाय 6 भी हो सकते थे, शायद बल्ले के बीचों बीच आई नहीं बॉल कासिम के। और अब फाइनल के ऊपर से बिलावल के करीबन गेंद हाथ लग चली थी, उछलकर उन्होंने कैच करना चाहा। तो 99 ये स्कोर है एंग्रो डॉल्फिन्स का। अब दोनों एंड से जो बाउंड्रीज हैं वो लाने के लिए कोशिशें हैं। ये अच्छी कोशिश बिलावल की जानिब से। 2 कैचेस आज इनसे गिरे हैं, लेकिन मुश्किल कैचेस है दोनों ही। एक ही रन मिला यहाँ पर। अच्छी फील्डिंग यहाँ पर। ज्यादातर आप कप्तान को देखते नहीं बाउंड्री पर फील्डिंग करें, लेकिन इफ्तिखार ने लॉन्ग ऑफ के एरिया को संभाल रखा है। 100 रन मुकम्मल हुए। देखना ये होगा कि एंग्रो डॉल्फिन्स इस वक्त उनका हदफ क्या है। बाकी मानदा 4.1 ओवर्स में वो जो 153 की हम बात कर रहे थे, उसके लिए भी उन्हें 12 से ज्यादा के रन रेट से रन्स बनाने होंगे। इकबाल इमाम हेड कोच हैं, उनके साथ महमूद हामिद ताहिर। महमूद हामिद एशिया कप खेले थे 1995 में पाकिस्तान के लिए। इस बार वार किया मिड विकेट की जानिब और 2 फील्डर्स के दरमियान इस गेंद को निकालने में कामयाब हुए कासिम अकरम। बहुत देर से उन्होंने हदफ बनाया था इस इलाके को। एक और अच्छा ओवर रहा डॉल्फिन्स के लिए 10 रन के साथ 104 पर 3। over a level. 35 dot deliveries with 39 ones in this inning of Anglo Dolphins. 104 for 3 at the moment. Last 4 overs to come. All eyes are definitely on Waqar Ahmed. 51 on his T20 debut. He's been playing around for 2018. He made his first class debut, played 21 games. He's also represented List A, 22 games for him. Played for Peshawar, KRL also. Flat bats it over the head of the fielder. This is good batting from Waqar. Pleases the former captain Salman Butt, who's alongside me. Thank you, Ali. It's a pleasing sight. Indeed, a youngster coming in, playing his first game, and that too on this platform of Barrier Town Champions Cup T20. And just have a look at him go. He's came in, settled in, and he's only 24 years old, belongs to the province of KP, and he has played for KRL as well. And he's come into a team which has been struggling to find players who get runs and build up partnerships. So he's come in and straight away he's delivered. This time a slower bouncer. Bilawal Bhatti, experienced campaigner, but you've got to give
front foot off the back foot against the spin. And great to see youngsters flourishing. It's ballooned one up in the air. Bilawal Bhatti setting himself under, takes it. Not happy with Khwaja Nafe because he believes he called it early. He's not happy with the wicketkeeper. But all is and that ends well. He's taken it and got the big wicket of Waqar, who was looking so good. He's disappointed, and rightly so, because he was playing beautifully. Lost his wicket to Bilawal Bhatti. Yes, a bit of confusion over there. In the end, the catch safely taken by the bowler himself. This is the second cotton ball we have seen today. And look at Nafe go. Just keep going. There is no calling. And he's rightly upset. Because you see, at this level, if you're not calling, and imagine if this set batter gets a life. Wonderful there from Waqar Ahmed, 55 of 47 on his debut. As Dolphins are 108 for 4. Towards you slightly. That's it. Thank you. The captain himself, runner Fahim Ashraf. The platform is set. Last 3.3 overs for him to bat. He's been in good touch in this tournament. 1,714 runs with the impressive strike rate of 140. Change of angle, great length. Hurried on to Fahim Ashraf. Bilawal Bhatti just got the wicket of the man in form, Waqar Ahmed. Yes, wanted to go big, straight down the ground, and ended up ballooning it. Went quite high, and there's Bilawal Bhatti underneath it from the word go, and Nafe just keeps coming in. And he's upset. He's not happy. His wicket could have gone down to the ground, and Nafe has something to laugh at. I spoke to Bhatti earlier. I remember whenever Bhatti bowls in Pindi, he falls down at least a couple of times in the tournament while bowling. So he told me that one of his colleagues in England, he asked him to bowl with the longer nails. And just have a look at this, much more stable Bilawal Bhatti. So since those long nails have been put into the shoes, no longer he's fallen down. And he's holding on to the catches as well. Good to see. Nafe learning it the hard way from the senior. Oh, great pickup. Great pickup, but straight to the man though. Oh, just falling short of the fielder there. He was in business for a while. That's why the smiles are there. Faizan, the fielder. Fahim Ashraf gets a lucky boundary. It's 112 for 4. Not chilly anymore, he believes. The other person doesn't believe in that. He's quite comfortable in that puffer jacket. It's been quite a chilly morning. The last flick shot from Fahim Ashraf, getting him off the mark. It was there in his own. The fielder was in business for a while, just dipping on him in the very last moment. Good effort, we'll have to say that by Faizan. So it's up to Fahim and Qasim to get to a decent total. 3 overs they have to make the maximum use of. As Nisar comes in and it's short and wide and beautifully cut. Delayed the stroke on purpose, making sure that the ball goes in the gap. And Qasim looked pretty neat doing that. He is also well set, 31 of 22. So there is a chance that the Dolphins, if they can have this last
good 3 overs, they might get to 140 plus. That will be a good total in these overcast conditions. Qasim Akram just slicing this one. Good game awareness. Realizing that the fielders are both inside the circle. Third is inside. This is good cricket. Tried on the other side this time. There's an opportunity to finish the inning. Qasim Akram finish on flourish. The missing link in his talent, in his skill. He's had the opportunities to finish the games, but hasn't done that in this tournament. Full of talent and potential. And talk about potential. There's a huge potential with Barrier Town Properties going global. They're creating a gated community in Dubai South. Huge potential there. And Qasim Akram. Let's play that towards onside and in the gap too. This is a good start to Fahim's inning. Couple of boundaries already. Yes, he picked up the length very quickly as he normally does. And he smashed it in the gap. On the square leg side. Just have a look at this. Slow one, length picked up and dismissed. 4 runs and Dolphins gaining some momentum. Not quite very intended, but he will get a couple of runs. Both very fit cricketers, Fahim and Qasim Akram. Talking about Fahim Ashraf. Salman, we've been talking about his ability as batter and the teams having trouble, especially Dolphins were in trouble. Look at those innings that he's played. 27, 25 and 25 again. And that is at playing at number 6 or 7. We were all of this opinion that he could have promoted himself with the team in trouble, not getting the combination right. As a captain, he could have quite easily. Yep, I agree with you, Ali. A man who is watching the ball well, he knows these conditions really well, and we have seen him that he plays the short ball really well, and that is what most batters have not been able to do in this tournament. So it might have been a good idea for Fahim to promote himself and to show others the way, and also give that required impetus to the innings, which Anglo Dolphins have seemed to miss out the whole tournament. There are the decision makers. Good bowling, appealing for red. Yes, given out. A few words also from Nisar to Qasim Akram, but the man is smiling because he got the wicket of Qasim. Among all that has happened, how good has Nisar been in this tournament? With the new ball, with the old ball, with the economy. And on one occasion, when required to bat, he did pretty well. And just have a look at this Yorker, full length delivery, aiming, and it would have missed leg and off stump and hit middle. That's how plumb it was. Qasim Akram, 31 of 24. And Anglo Dolphins, 1-2-4 for 5. Abbas Afridi, back from South Africa, and right here in the center of the Rawalpindi Stadium with the Anglo Dolphins, looking for a good cameo from him, and he is very much capable of that. We have seen him hit the big balls in PSL, in international cricket a couple of times, and now is the time when a side really needs him. The challenge isn't going to be easy. Akif has been brilliant with his pace, with the hard lengths, and he's a tall lad. It's Fahim Ashraf to take the strike. And straight away a short one and no timing. Late on the stroke was Fahim Ashraf. Yeah, he's here because this is what happened the previous delivery. How good was Nisar Ahmed? He's somebody who's good from nose to the toes. He can bang it short,
ball those quick bounces, and then the Yorkers like this. So a very good prospect as far as Nisar Ahmed is concerned, especially on a surface like this, which has that extra spice, extra bounce in it. Yeah, you said nose to the toes, and you missed the most important thing that he uses, his brain, which is above the nose. Yes, this one is another one ballooned in the air, and mid-off is under it and takes the catch easily. It's Nawaz. The safe hands of Nawaz are good enough to send Abbas on a golden duck. Anglo Dolphins 1-5 for 5 as they get into deeper trouble. Abbas Afridi looking to go big on the very first delivery that he faces. Still in that South Africa zone where he played that beautiful last over in that T20 inning. Hit a huge straight six, but not to be this time. And a very smart catch. He's always a smart fielder. Mohammad Nawaz goes back without troubling the scorer. 125 for 6. Ghazi Ghauri playing his second game, 27 runs with a strike rate of 168, highest of 27. Just giving himself room, beaten by pace. Akif is good. He's finding the length also. He's here because Abbas Afridi wanted to go big on the very first delivery. Yes, once again, angling the ball away. Abbas wanting to go straight. The idea was right. Mid-off was in the circle, but he couldn't get it in the middle of the bat. And in the end, holding out to Nawaz, who took a good catch. Akif has been pretty good in this game. In the previous game, earlier on, he bowled a few wides. There was a boundary of a wide ball as well, costing him and his team. And this is a good use of the angle and the pace. This is the second time that it's been done in this innings. And wonderful stroke this from Ghazi, who very quickly has picked up the angle and made good use of that. 4 important runs to Anglo Dolphins, who get to 129 with this boundary. They're checking whether it's a 4 or a 6, and it's pretty evident. 4 runs. And that was a great pickup of length and the angle by Ghazi Ghauri, because bowling now has changed the angle, coming over the wicket. So around the wicket now. They're running for it. Yeah, something that has improved for UMT Markors in this game is the number of wides. They bowled 19 wides in the previous game against Lions. And today, they've just bowled 1 wide. That off from Akif. He bowled 11 wides in the previous game. So that's where they've improved on. And that's what Salman, good teams do. They realize the mistakes, come in the next game, worked on it. Absolutely. And a very busy sports staff of Markors, always talking strategies, always thinking what to do next. And this is what they are here for. As this one has been cut. And once again, Fahim not getting the timing, as 19 overs are now complete. And Anglo Dolphins are 1-3-1 for 6. Right, last 6 deliveries.
for Anglo Dolphins. How many can they get? That's the question. Fahim Ashraf definitely has the potential. That's the Anglo Dolphin camp. It's very easy that this camp cannot be a happy place at the moment because they're not winning games. Great Yorker. Yes, well bowled that from Nisar. Looking for two, but the fielder is quickly on it. Talk about the Anglo Dolphins. A lot to think about for their sports staff. They've tried different players, different combinations, different 11s. Nothing seemed to have worked for them. And I'm sure they'll have their work cut out. They'll have their diaries full of what to do, what not to do. And on the other side is another dressing room, which is winning, but they still look very concerned. And Samiullah Niazi. And with him is Misbahul Haq Niazi. So both talking about the game. As this one is close and the finger would go up. Once again, Nisar proving fatal for the opposition. He's taken 3 now for 15. It's his final over. Anglo Dolphins in the end falling apart. 1-3-2 for 7 now. Yeah, that's where he's so good. Consistently looking to hit the stumps. That's where the success is for him. Shuffling across. That would definitely hit leg stump because he was deep in crease. Ghazi Gauri just scored one boundary. As he walks back scoring 4 runs, it's 132 for 7 now. Right, Shayan Sheikh, 32 runs, with strike rate of 128. What can he do? How many can he add in 132? This is where he's so good, Nisar, bowling those death overs. The command he has bowling those Yorkers. Of course, yes, Samiullah Niazi being the bowling coach will be a very happy bowling coach for him, because he can bowl deliveries like this, hitting the stumps on regular occasions. That's the sort of a bowler he is, and then has the ability to bang it short too. Now it's Fahim Ashraf. And Fahim, if he can strike a couple of big blows, can move his side closer to 150 mark. As this is the first one. It's big and it's straight and it's out of the ropes. The first one has come, as we just mentioned, and 3-9, and His front leg, great swing of the bat, great result for him also. So you got to mix it up. You cannot be predictable in this format. yep. 2 more will take them to 151. They have to be hit one by one, as this is a decent bouncer, and Fahim doesn't get a bat on it. So one chance is gone, and now a maximum will take them to 145. And that's what Fahim will look to do. And Nisar will try to outthink him. Right, the last delivery of the inning. Fahim Ashraf to face Nisar. Swings, not quite elevated right, but there is a fielder who takes it. Shazad, the man there at long on, takes a very smart catch and ends the inning of Dolphins, and Fahim Ashraf was looking to go big, looking for maximum runs. And it's 4 wickets for Nisar, just given away 22 runs. That's an excellent spell of bowling. Yeah, it's wonderful to see youngsters coming up on the bowling charts, and Nisar is one of them.
once again picking up a wicket, picking up 4 in this game, giving away 22 runs, economy less than 6, and he moves his wickets tally to and Anglo Dolphins would feel that there's another day, but the story has been the same with the bat. Yeah, but the story has been same for this side also. Very disciplined always. They've done their part. First of it, 55 by Waqar. I think he was live wire in this batting order. 13 for Salman Khan. He looked good before he got run out. Qasim Akram again looking good for 31. Fahim Ashraf finishing the inning with 20 as they score 139 for 8 in their allotted 20 overs. UMT Markos with the ball were once again, as usual, very good. Nisar picking up 4 for 22. Nawaz 4 overs for 16 runs only. Brilliant economy. Akif 4 overs 28 for 2. And Saad, touch expensive, 3 overs 24 for no wicket. Bilawal Bhatti came in, bowled 4 overs, took 1 wicket for 30. And the 1 over bowled by Faizan, in the end restricting the Anglo Dolphins to 139 for 8. Right, the star for Anglo Dolphins was Waqar Ahmed for his 55 runs. He's down there with Marina Iqbal. Well, I've got Waqar Ahmed with me, the man of the moment. Waqar, आते ही एक शानदार इनिंग्स, पहले बताएं कंडीशंस कैसी थी और आपका माइंडसेट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बस जैसे मैं गया अर्ली ऑन विकेट गिरी तो बॉल थोड़ा सा सीम हो रहा था, तो कोचेस ने भी यही बताया कि आपने जाके थोड़ा सा नॉर्मल कहना है, उसके बाद जो जब आप स्टेट हो तो लंबा जाए। आपने कायदे आज़म ट्रॉफी में भी अच्छा परफॉर्म किया, T20 में आती पहली इनिंग्स में, तो T20 के लिए क्या किन चीज़ों पे काम किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कायदे आज़म ट्रॉफी में भी अच्छा खेला हूँ मैं। उसके बाद मैं पहले टीम के साथ ही था, तो फिर सारे लड़के आए, तो यहाँ भी मैंने बहुत कोशिश की। हमारे कोच है साजिद शाह, उसने कभी बताया कि क्या क्या करना है, तो मैं घर जाके वहाँ पे उस पर काम किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर कामयाबी। आप और माज जो है वो पेशावर के लिए ओपन करते रहे, तो इस टूर्नामेंट में भी कोई मुकाबला आपस में चल रहा है रन्स का? वो तो माशाल्लाह बहुत अच्छा खेला। मेरा तो डेब्यू मैच था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा किया। इससे पहले मैंने अंडर 19 में काफ़ी रन्स किए थे, वो भी लाइव आ रहा था, तो उसके बाद 5 साल बाद में खेला हूँ T20 मैच। और ये तो आपको लगता है कि टोटल डिफेंड हो जाएगा इजीली? इंशाल्लाह। विकेट आसान नहीं है, मुश्किल विकेट है, हमारी बॉलिंग भी अच्छी है, तो कोशिश करेंगे कि डिपेंड करें। All the best and thank you. Thank you so much. Well, we had Waqar Ahmed with us, and now back to you guys in the comm box. Yeah, that was Waqar Ahmed. Though, is this of opinion that this is not an easy pitch to bat on, and definitely 139 they will fancy defending rather. But 139, this is how they did it. The openers coming in with high hopes, but the shots were not the ideal ones. As Tahir Beg was bowled out trying to pull one which wasn't as high, and then Saib
देता हूँ 1 मिनट. बड़ा ओए फाकिया ये ले सिद्धरांटी की कॉल है. ये ले
Did their work early on with the conducive conditions. Nisar, he skids on delivery to make use of that condition and swinging. To cover up and post this total. But now it's the job for the bowlers. We've got Sameen Gul, Ehsanullah, Abbas Afridi is coming in to the playing 11. The openers, all aggressive. Fakhr Zaman and Nafe. They would like to go after the bowling attack from ball 1. Just need to adjust to the conditions ever so slightly. And I've got my opening partner with me, Shah Faisal. How do you think Anglo Dolphins would approach this? Thank you, Marina. Yeah, they have to go all out. They're still searching for that first victory. And what they can gain confidence from is that the UMT Markors top order has faltered on many occasions in this tournament. Fakhr hasn't been at his best. Khwaja Nafe has been patchy. And even in the last game, one of the games, they were 74 for 7 rescued by young Saad. But there is no doubt about the prowess and the quality and the caliber of Fakhr Zaman. 264 matches, approaching 7,000 runs in this format. Average and strike rate combination is well above the 160. That is the yardstick for the very successful top order batters. Young Nafe, early days. Very, very good potential, very good talent. Well, the conditions, still there is a bit of seam movement off the surface. The mean goal, he would like to utilize it. He's a decent bowler, an economy of 8.34, 57 wickets in 57 matches. But Fahim Ashraf would like him to strike straight away. Fakhr Zaman will be facing the first delivery. One slip for him. Deep fine, deep third. Slightly just the slowness of the pace that has actually created troubles for the batters to time the ball. Plays the call and here's the chase underway. Swing and a bit of a carry from that hard length. Wow, Sameen Gul really bending his back. The angle, he always has that angle leaving the left-hander with the new ball. But it's just the heat on it. Fakhr Zaman, not his usual high standards, but he's coming back after an illness. Getting to full fitness and match practice. That's the most important thing for him. Wild swing from Fakhr. Again that angle going away from him. Slightly fuller of that occasion, Fakhr. Not sure what that shot was from Fakhr Zaman. Yeah, what happened afterwards was interesting as well. Fakhr had made up his mind very early where he wanted to hit it. Sameen Gul with a longer follow through. They've obviously played a lot of cricket together. Good to see. Good afternoon, Fakhr Zaman. That's what Sameen Gul was saying. And again, just chasing that outside off-stump delivery. We'll have to bowl that again. Just get it on with that swing and angle for Sameen. Let's not forget Sameen Gul picked up 3 wickets against Markors. The last time they were up against each other, giving away 23. He would like to repeat that performance. A bit of a buzz in the Anglo Dolphins camp after that start. Slip in place, Fakhr Zaman. Well, generally he knows only one way to play and he's very good at that.
got good tight ring around Fakhar Zaman. Offside is packed with fielders. You really need to thread the needle to get that gap going. Which was on offer but couldn't really capitalize on it. We've noticed here on this Pindi pitch that if you try to bludgeon the ball, you don't really get much. But if you're looking to time the ball, that's where you get the maximum benefit. It's a murky afternoon in Pindi. We've got few people turned up. Always is the case when we play in Pindi. Cracked, didn't get the hold of it. Just trying to force those shots, and we know that Fakhar would rather rely more on power, especially when a batter is struggling with form. He wants to get off the mark quickly. Right off the cue end of the bat. He's going against the tide. That ball is leaving him, and he still wants to fetch it from way outside the off stump onto mid-wicket. At least he's off the strike now, and it will be an opportunity for Khwaja Nafe. Khwaja Nafe has also had a mixed bag of a tournament, but he's shown glimpses of his talent and his potential. Yet another opportunity for him. Slight change in field. Fine leg has gone back. Initially square leg had gone back, but it's come back now. Just the standard field now. Fine leg and third back with a wide slip in place. Good swing there, a bit of hesitation. Safely home. Vakar, he delivered with the bat, but on that occasion couldn't really hit the target. Tentative from Nafe. Yeah, the problem is that charging that ball, Vakar had to be content with that green AstroTurf that is covering one of the other pitches. Couldn't really launch himself into the throw. Fakhar back on strike, hasn't conceded a boundary, Samin, in this over so far. And just be careful giving room to Fakhar. Good delivery. Really good over to start off with. Did gave 3 runs, but no freedom to UMT Markors openers. First over gone, UMT Markors 3 without loss. Cautious start from UMT Markors. Fakhar Zaman did try to go big, but the movement of the seaman in the air have kept him quiet. Fahim Ashraf now, the skipper, will share the new ball with Samin Gol. One slip in for Khwaja Nafe. Deep fine. That's deep square leg and deep third. Not giving away any easy run so far, and it's good attacking cricket from Dolphins. Good line, good length from Fahim Ashraf, but already you see that when Khwaja Nafe is looking to just time the ball, it really pinged off the middle. And what Fakhar was trying in the first over, he was trying to bludgeon, and nothing came out of the middle. It's the offside field. Cover and mid-off, hanging on the 30-yard ring. Guided it down to the third. Yeah, I do understand that these batters, they want to score big. But when you look at the whole equation, the only required run rate is just around 7.27 now. So they have a whole innings in front of them. Probably just jitters early on. And they would be looking to reclaim their position up top the table. Anglo Dolphins, if they lose this, it's game over for them.
Up and over. Protection there just for the single. Interesting, the race to the final, because there's a opportunity for the team that finishes on the top that they will qualify directly for the final. And UMT Markhors definitely will be eyeing that. That's why they're not using their full squad. They just relied on 13 players so far. UMT Markhors with a game in hand against Italians. If they win this one, they'll jump to the top with 2 games to go. That's a big incentive for UMT Markhors here. Ah, crafted it. Beautifully done. Literally out of nowhere, he managed to get that space outside off. Up and over the infield for a boundary. That is an incredible stroke from Khwaja Nafe. He arched his back and created that width for himself, and then fast hands through the ball. Look at that. It wasn't really that wide, but then you see the way he arches himself backwards, allowing that freedom of the arms to go through, almost carrying all the way. This is a good cricket stroke. This time into the leg side. Dropped short by Fahim, over correction, and he's up against him. Back-to-back boundaries. Well, that's Khwaja Nafe at his very best. Fahim Ashraf trying to even tighten that line. That wasn't too bad even on the previous delivery. Guilty of just getting a bit too straight, and Khwaja Nafe didn't need any other invitation. Have a look at that, how quickly he picked it and pounced on it. This is good cricketing strokes, both of them. This man has got a lot of potential. Slip out. Short mid-wicket in place now. Deep into the crease. Dot to end the over. After 2 overs, UMT Markhors are 13 without loss. Controlling aggression shown by Khwaja Nafe. Managed to pick up 2 boundaries in the previous over against Fahim Ashraf. Slip in now. Samin goal to continue. Apesh. But he will pick up a boundary. Not in control, but he'll take the results. That's the problem against Fakhar. You don't want to provide him with any kind of width. Just saw that and went after it. Not from the meaty part of the bat, but still away from any fielder. Just see the line there. That was the trouble. And this time, Fakhar didn't really bludgeon it. He was looking to time it. Better connection, better result. Not quite the perfect result in terms of where the ball hit the bat. But boundary to get Fakhar going. Up and over. This time he knew exactly he wanted to hit. Width was given, and so was the freedom. Overcorrection in terms of the length, and Fakhar read it. It was fuller, still quite wide. The width was there, and Fakhar just went after it this time. Over cover. Better shot than the previous one. Fakhar getting into his groove. We just saw a hint of Ahsanullah earlier. I'm just intrigued to see Ahsanullah versus Fakhar Zaman. What a contest that would be. Good cricket there. Soft hands. Straight loud call. Samin and Fahim probably are missing the length. Dropping it fraction short. The swing is there. Need to pitch it up, but
The line has to be correct. Well, we saw Hasanullah getting 2 wickets in the previous game. That'll be very interesting if he comes on to bowl against the likes of Fakhr and Nafe. Hasanullah is a character, and Fakhr we all know, and even Nafe, they will go at him. There'll be some contest. Tip swing there off the hips. Another single added to the total. And also, Anglo Dolphins will require early wickets. That 140 on the face of it didn't seem to be the par score, but we know in these kind of run chases, few quick wickets can really add 20-30 runs to the target that's seemingly on the board. Cold and foggy afternoon. Crowds very well wrapped up. Yeah, he's not happy with the bat. I think he cracked it on the point where the handle joins it. Khwaja Nafe did score 68 of 42 deliveries against Anglo Dolphins. He'll definitely have that in mind. 10 already off the over, 2 more deliveries to go. Picked up off the pads, and I think the fielder has missed it. Another boundary, more pain for Samin Gul. Looks like it's Shayan Sheikh who couldn't judge on the pace on the ball. This outfield is very quick, and when we have a look, you see that Fakhr has given it the full Monty. Anytime Fakhr goes like this, he doesn't hold back, and obviously Shayan was deceived by the pace of the ball. A bit of a demotion in the field. He's been asked to move from his position. He's at 45, and slip has gone out to mid-wicket. There's a fielder back at square leg now. Defending 140, you would expect better commitment from the fielders. Nudging around for a single. Will keep the strike. An expensive over from Samin Gul. 15 coming off it. 3 overs gone, 28 without loss, UMT Markors. Crowd coming in, watching their favorite stars in action, regardless of what the weather is. Hasanullah. Well, you got your wish, Shah Faisal. It's going to be box office. We know that for sure. Starts off well, good line, good length, no room given. No, just trying to create some room towards the offside. Ambitious appeal from Hasanullah. He was the only one appealing. You could hear him in the entire stadium. His squeaky appeal. How was that? Well, that run up and rhythm
seems pretty good. Nice strides, breaks into the run, gathers pace. Look at that non-bowling arm as well. And then the good flick of the wrist. It was a matter of time. 3 dots. Fakhar Zaman had to go. And that's where he's innately good at. Ahsanullah saw the ball soar and then started to walk back to his run-up. That is not the one where he wanted an extended follow-through and an eye-to-eye contact with Fakhar. This was in the arc and out of the park. Still, I didn't think it came right off the meat. That bat turning in his hand. But such is his power that it still went a long way. Ahsanullah's response will be very interesting. Fuller just nicked it for a single. Has he? I think they are leg bias. I was expecting a short pitch delivery. Instead, he went for the Yorker. Probably hit Fakhar on the back heel on the way he is limping. Just one ball to go. Even Khwaja Nafe versus Ahsanullah is also mouth-watering. Have a look at that. Just hit him flush on the boot. Probably just going down leg. Cautious approach from Nafe, just nudging it down to third. Single to end the over, 7 off it. UMT Markors after 4, 36 without loss. छत्तीस बगैर किसी नुकसान के यूएमटी मार्कोर्स 4 ओवरों के अख्ताम पे और अब अब्बास अफरीदी को जिम्मेदारी दी गई है. पहली गेंद पर बिल्कुल लाइन पर नहीं थे, इसलिए ये 5 रन बन गए. बॉलिंग में जो तब्दीली है उसका भी खातिर खा असर हुआ नहीं. यूएमटी मार्कोर्स के लिए रन्स आ रहे हैं और जब स्कोरबोर्ड का दबाव ना हो तो बल्लेबाज और ज़्यादा आज़ादी महसूस करते हैं. नाफे और फाखर इस वक्त कुछ ऐसा ही एहसास दिला रहे हैं. अब्बास अफरीदी से बड़ी तवक्कुआत हैं क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट खेल कर आए हैं. ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका का दौरा करके आए हैं. फाइनल की जानिब इसे खेलने की कोशिश की, पैडल नहीं कर सके नाफे. बेहतरीन आगाज मार्कोर्स की जानिब से. अली या इससे बेहतर काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलेगा जिस तरीके से मिडल किया है और एक लंबा छक्का भी लगाया है एहसानुल्लाह को. तो ये बहुत ज़रूरी है यूएमटी मार्कोर्स के लिए क्योंकि जंग जो है वो नंबर 1 स्पॉट की है. देखते हैं कौन नंबर 1 पे पहुंचता है. तो और वहां जब पहुंचेंगे तो फखर का रोल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है. बॉलर के सर के ऊपर से वार किया खुल के फखर जमान ने. 4 रन के लिए खेल गए. ज्यादा रफ्तार नहीं है फखर जमान जैसे खिलाड़ी के लिए. अब्बास आफरीदी की बेहतरीन एरिया चूज कर रहे हैं और जब भी फखर इस तरह खेलते हैं सीधा हिट मारने की कोशिश करते हैं तो समझ लीजिए कि खतरा है क्योंकि बहुत क्लीन हिटर है
पाकिस्तान की तारीख के सबसे शायद क्लीनेस्ट हिटर होंगे, जिस तरीके से हिट मारते हैं, जो जोरदार हिट मारते हैं, अपनी टांग को क्लियर करते हैं और जानदार शॉट खेलते हैं। बड़ी तेजी के साथ उन्होंने रन बनाया। गेंद बकार सामने आ रही थी। फखर जमान ने तमाम मैचेस में ओपनिंग की है। पहले मैच में 0 पर आउट हो गए थे डॉल्फिन्स के खिलाफ ही। बाद में लायंस के खिलाफ 11 रन बनाए, पैंथर्स के खिलाफ 13, फिर लायंस के खिलाफ 28 पर आउट हुए। स्टैलियंस के खिलाफ इन्होंने 39 रन की इनिंग्स खेली और आज ज़्यादा बेहतर बैटिंग रिदम में लगे और 4 रन ज़्यादा दूर नहीं थी गाजी गौरी से। अभी तक सही लाइन और लेंथ पकड़ नहीं पाए हैं बास अफरीदी। साउथ अफ्रीका से आए हैं और यहाँ पे जो मौसम भी है, ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, थोड़ी ठंड है, अभी उस तरीके से यूज्ड टू हो नहीं पा रहे हैं। और लेग साइडिश लाइन और जितनी दोनों बैटर्स ये फॉर्म में हैं, ये मिस आउट नहीं करेंगे। और फ़खर की खुशकिस्मती ये भी रही है कि नाफे बहुत अच्छी डैब के किया। 1 रन के लिए सिर्फ 5 रन की औसत यहाँ से चाहिए मैच जीतने के लिए, तो वो तो फिक्र होनी नहीं चाहिए। लेकिन यूएमटी मार्कोर्स की टीम को यहाँ से खेलते अपनी रफ्तार पे रहना होगा। खेल की रफ्तार हम समझ सकते हैं बिल्कुल और है मुख्तलिफ है, लेकिन इनको वो जो T20 की रफ्तार है वही अपनाए रखना होगी। सही सोच भी यही है। यार ये लोग खेलते भी ऐसे ही हैं तारिक भाई। अगर इनकी आप बैटिंग लाइनअप पे देखें, फैजान की बात कर लें, इफ्तिखार, समद, सभी एक तरीके से एक ही गियर में खेलते हैं। और मिसिंग लिंक था, आज उसने भी वो खाना पुर कर दिया, वो था फ़खर की फॉर्म। यूएमटी मार्कोर्स के पास टूर्नामेंट की सबसे ताकतवर काबिल बैटिंग लाइनअप है। फ़खर जमान दूर से शॉट खेलने के लिए गए, इनसाइड एज पर 4 रन मिल गए खुशनसीबी के। जब आपकी फेवर में चीजें जा रही हो तो सब कुछ ही आपकी फेवर में जाता है। इवन इनसाइड एजेस भी आपकी फेवर में जा रहे हैं, दूर से खेल गए। तो जब आप अच्छी हिटें लग रही हो तो इंसान शायद कभी कभी थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट भी होता है कि ये भी लग जाएगी, लेकिन ये थोड़ा दूर थी लेंथ और लाइन भी। एहसानुल्लाह फ़खर जमान को तकरीबन ले आए थे अपने नाम में। यहाँ पर पुल शॉट खेल के हैं 4 रन के लिए। स्कोर के पीछे थे बाउंड्री फील्डर, लेकिन फ़खर जमान का शॉट खासा ताकतवर था। तेज बॉलर हैं एहसानुल्लाह, इसलिए ये रुकने में नहीं आई। यहाँ थोड़ा पेस का भी इस्तेमाल किया है और बल्ले का स्विंग भी बहुत कमाल का था, प्लेसमेंट भी अच्छी रही। अच्छी पेस से बॉल कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में एहसान, और इसलिए जानते हैं फ़खर के पेस का इस्तेमाल करेंगे, प्लेस करेंगे तो बाउंड्रीज जरूर हासिल करेंगे। डीप थर्ड को अब आगे लाया गया है, लॉन्ग ऑफ पीछे, और फ़खर जमान ने इसे बैकफुट पर जाकर स्मैश कर दिया, वहीं से जहां फील्डर आगे बुलाया गया था। 4 रन और मिलके रहे। फ़खर जमान को रोकना इस वक्त नामुमकिन हो रहा है। इस बार थोड़ा इंतजार किया, लाइन भले थोड़ा दूर थी लेकिन इंतजार किया। ये अच्छी समझदार बैटिंग है, जब आपकी लग रही हो तो आपको उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए, और वही फ़खर कर रहे हैं। क्या शानदार हिटर है, कितने अच्छे लगते हैं हिट मारते हुए।
कंट्रोल में लगते हैं, नेचुरल लगते हैं। थोड़ा इंतजार कर रहे हैं कि क्या ये चौका है या छक्का। फ़हीम अशरफ तो बहुत ही परेशान रहे इस टूर्नामेंट में, चेंजेस भी करके देख ली, बॉलिंग में बैटिंग में सब में चेंजेस करके देख ली, लेकिन काम कुछ नहीं आया। ये तो बहुत ही आसान डिसीजन होना चाहिए था ऑन फील्ड अंपायर के लिए तारिक भाई। जहाँ शायद आज मैदान में बादल हैं, धुंध के आसार हैं, अंपायर ना देख सके हूं। पुल शॉट, यहां पर फिर रन आएंगे 4। एहसानुल्लाह ने पहली गेंद आगे की थी, दूर की थी और तकरीबन कारगर हो चले थे। उसके बाद से उनने पटखना शुरू कर दिया है और अब फखर जमान के हाथों में खेल रहे हैं। नहीं, आप तो जैसे चाहें जहां चाहें फखर जमान चौके पर लगा रहे हैं, लेंथ से नहीं चूक रहे हैं। आपको यहाँ पे वेरिएशन भी दिखानी होगी। अगर आप एक ही लेंथ पे बॉल करते रहेंगे थोड़ा प्रेडिक्टेबल हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा इनटू द पेस स्लोअर वन का इस्तेमाल यूजुअली करते नहीं है एहसानुल्लाह, सिर्फ पेस पे ही इन्हिसार कर रहे हैं। ये लेंथ डिलीवरी थी, ये बेहतर गेंद थी, क्योंकि फखर जमान जो हैं इनका अगला पाँव नहीं जाता है गेंद की लाइन की जानिब, तो इसलिए ये बुरा ख्याल नहीं था। इस ओवर को अच्छा शुरू किया था, लेकिन उसके बाद से अचानक इनको तेज बॉलिंग करने की सूझी फखर जमान के सामने और उसका नतीजा बुरा रहा है। नाफे के लिए एक गेंद है इस ओवर में और बैकफुट पर जाकर खेल दिया शानदार तरीके से